MCQs के लिए this might be a relevant thing. Economic integration. This is basically about when countries join together and they want to promote trade amongst each other. ज़्यादातर ये बनता है रीजनल बेसिस के ऊपर. Like for example, you have NAFTA, North American Free Trade Agreement, जिसमें you have नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो 3 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इनका आपस के अंदर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है. सो नंबर 1 इकोनॉमिक इंटीग्रेशन is called a free trade area or an FTA. इसका example I'll give is NAFTA. So basically इसका I think we should in fact even mention के economic integration है क्या. So I'll say, like I'll define it, that it is when countries decide to promote trade amongst each other. By forming trade alliances. Let's say you have the United States of America with its currency, US dollars, and you have Canada with its currency, Canadian dollars, and third you have Mexico with its currency, pesos. अब ये तीनों countries नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं. What they have decided is to trade amongst them without any kind of barriers. तो ये countries आपस के अंदर basically without barriers trade करेंगी, even like Mexico for that matter. So अब situation कुछ यूं हो जाती है कि point A is that इसके जो members हैं they trade without barriers. तो लेकिन जो एक separate country है, let's say China, with which you were trading before, अब China हो जाता है non-member over here. And the thing with China is that they will all have tariffs against China. They will all have tariffs against China. Matlab, let's say Canada can have 10% tariffs, Mexico can have 15% tariffs, United States can have like 8% tariffs. So what this means is that each member will have their own external tariffs
नॉन मेंबर। अब यहां पर the thing to see over here is that रिमेंबर जब ये आपस में एक दूसरे से ट्रेड विदाउट एनी टैरिफ्स करेंगे तो इनको एडवांटेज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू गेटिंग द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना जिसके ऊपर यू विल हैव टू पे सम एक्सटर्नल ड्यूटीज। नाउ लेट्स सपोज तीनों कंट्रीज कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ठीक है, और तीनों कंट्रीज को चाइना से स्टील मंगाना पड़ता है। So Canada is importing at 10% duty, Mexico is importing at 5% duty, and USA is going to import at 8% duty. तीनों के पास वो रॉ मटेरियल आता है at different tariff rates, तो naturally यूनाइटेड स्टेट्स इज एट एन एडवांटेज बिकॉज उसको 8% के ऊपर ड्यूटी पे आ रहा है प्रोडक्ट, और बाकियों को थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कनाडा की गाड़ी वर्सेस मेक्सिको की गाड़ी विल बी मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तो एक मसले की बात है। ऑब्वियसली आपस के अंदर इनकी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर the two countries are at disadvantage against the United States. Also, United States का जो exchange rate है वो भी stronger है as compared to Mexico का peso और Canada का dollar, तो वहाँ पे भी United States को एक advantage होगा in terms of currency exchange, तो obviously the bigger country is going to benefit from it. ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इनका ये जो अग्रीमेंट है दैट कैन फेल, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे मूव ऑन टू अ सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं हम कस्टम्स यूनियन। ये दूसरा किस्म का इंटीग्रेशन हो। सो बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस इन द फ्री ट्रेड एरिया कस्टम यूनियंस के अंदर थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है। नंबर वन, जो मेंबर्स हैं दे ट्रेड विदाउट बैरियर्स, तो ये दोनों के अंदर सिमिलैरिटी हो जाती है फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम यूनियन के अंदर कि मेंबर्स जो है विदाउट बैरियर्स हैं, और डिफरेंसेस के अंदर कस्टम यूनियन के अंदर वी से मेंबर्स हैव अ कॉमन tariff या कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ with non-member। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है बेसिकली सिमिलर टू आवर केस अबव, लेकिन उसके अंदर ये वाले जो रेट्स हैं ये एक सिंगल रेट हो जाता है, लेट्स से 10%, और अब जो इतना भी ट्रेड होगा वो आप एक्सटर्नल, इससे क्या हो रहा है जो चाइना से डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफरेंट एक्सटर्नल रेट की वजह से एडवांटेज आ रहे थे वो आपने एडवांटेज ख़त्म कर दिया। अभी भी सर्टेन एडवांटेजेस आर ऑलरेडी इन प्लेस। फॉर एग्जांपल ये जो करेंसी का कन्वर्जन है, डॉलर्स आर स्ट्रॉन्गर सो अमेरिका इज गोइंग टू हैव अ लिटिल मोर एडवांटेज ओवर इट, और ये सिर्फ गुड्स मूव कर रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो हमारी थर्ड टाइप है विच इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक और ए मॉनेटरी यूनियन। एएस के अंदर इसको तुम थोड़ा डिफरेंट
नॉर्मली ट्रीट कर लोगे, लेकिन अभी जो है ओ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक या मॉनेटरी यूनियन को वी आर गोइंग टू अस्यूम इट टू बी द सेम। इसके फीचर्स क्या हैं? ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक यूनियन है, लाइक योर यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर यू हैव अबाउट लाइक 27 कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस, यूके। सो उसमें क्या बात हो रही है? उसमें एक बात तो ये है कि जो मेंबर्स हैं वो ट्रेड करेंगे विदाउट बैरियर्स। ये पहली बात हो गई। दूसरा, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ्स with नॉन मेंबर, जस्ट लाइक कस्टम यूनियन। ये तो दो सिमिलैरिटीज हो गई कस्टम यूनियंस और इकोनॉमिक यूनियन के बीच में। अब जो डिफरेंसेस आएंगे इनके बीच में वो ये हैं। एक, लेबर एंड कैपिटल कैन ऑल्सो मूव बिटवीन मेंबर्स। इसका ये मतलब हुआ कि कस्टम यूनियंस और फ्री ट्रेड एरिया में सिर्फ गुड्स मूव कर सकते थे, मेंबर्स के बीच में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज कुड हैव मूव्ड अराउंड विदाउट एनी बैरियर्स। अब हम कह रहे हैं लेबर और कैपिटल भी मूव कर सकता है, मतलब एक लेबर जो जर्मनी के अंदर अनएम्प्लॉयड है वो फ्रांस में जाके नौकरी कर सकता है। बिजनेस इक्विपमेंट, मशीन्स वगैरह जो जर्मनी के अंदर लेट्स से यूज नहीं हो रही, फ्रांस में उसकी डिमांड है, वो वहां पे मूव हो सकता है विदाउट एनी पेइंग बैरियर्स। इनके बीच में जो टैक्स सिस्टम्स हैं वो भी सिंक्ड होंगे, हार्मोनाइज्ड होंगे। बिकॉज द थिंग इज, अगर एक लेबर मूव कर सकता है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, एक बिजनेस मूव कर सकता है दो कंट्रीज के बीच में, तो टैक्स सिस्टम जहां के फेवरेबल होंगे वो वहां जाना प्रेफर करेंगे और वहां पे काम करना प्रेफर करेंगे। तो इस वजह से दो कंट्रीज के बीच में जो टैक्स सिस्टम्स हैं उसकी थोड़ी सी हार्मनी की रिक्वायरमेंट है, ताकि कोई एडेड एडवांटेज ना हो किसी कंट्री के पास, अदरवाइज एवरीवन विल वांट टू मूव टुवर्ड्स दैट। एंड लास्टली, जिससे इकोनॉमिक यूनियन और मॉनेटरी यूनियन के बीच में फ़र्क आता है वो ये है कि दे विल मूव टुवर्ड्स अ सिंगल करेंसी। जैसे ईयू के अंदर यूरोस का इस्तेमाल हो रहा है, all of the countries they basically gave up their own currency and they went on to use euros, which is one singular currency. इससे उनका क्या होता है, एक बड़ा अच्छा एडवांटेज ये हो जाता है कि जो बीच में एक्सचेंज रेट में डिफरेंसेस थे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। हर किसी के पास सेम प्राइस लिस्ट है और सेम प्राइस के ऊपर दे बाइंग द प्रोडक्ट। तो वो जो एक एडवांटेज था कस्टम्स और फ्री ट्रेड एरिया के अंदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स, वो एडवांटेज आपके पास ख़त्म हो जाता है।